हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था जिस पर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगांव में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर जो की बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है और उसी का भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। अब मैं जीओसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen. To begin with, I would like to compliment the entire team of security forces which were part of this operation last night under most challenging and trying circumstances. As you're aware that these ops and this particular op was not an isolated operation. This was part of a series of human intelligence-based operations that have been undertaken in 15 Corps in the past few months. This, of course, with this success, and as IGP Saab has said, we have taken a very important step in neutralizing the threat of Jaish-e-Mohammed in this area. I would like to briefly highlight that with neutralization of Zahid Manzoor Wani, who was the chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. I would also like to highlight that in last few months, I'm sure all of you are aware that there have been close to 9 PTs who have been eliminated. There is also an increasing trend that the PTs have been targeting our brothers and sisters, the civilian brothers and sisters, and in that some of the security forces in the past couple of months we have bought certain casualties, and all of them have been as part of making sure that our citizens are safe and secure. And in fact there is a very deliberate effort that we ensure that all of our people who are residing here are given the due security by all of us. Once again, my compliments to the entire team, the RR, JKP and CRPF. I will now request the commanding officer, Colonel Tom, to just briefly take you over some of the events which led to this very important milestone operation. Tom. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll just briefly update you on Operation Naira, which was conducted yesterday and today morning. The input that we had received was from a very credible source of a specific movement of 3 to 4 terrorists in the village Naira. Based on that, a swift cordon was launched, a swift operation was launched, and a swift cordon was laid in the general area by a joint team of SF, including Army, JKP and CRPF. Once the initial cordon was in place, the terrorists subjected the team to very heavy volume of firing. However, at that time we were not able to retaliate due to keeping in mind the safety of the civilians who were inside the target area. The primary concern was to evacuate the civilians initially, so that the operation can be conducted accordingly. This was done in a very deliberate manner, and once the civilians inside the cordon was evacuated, then the operation was carried out. The 3 terrorists who were hiding inside the target house, they came out, subjected us to very heavy volume of fire, and were neutralized in the initial contact itself. However, the 4th terrorist who was there in the target area was neutralized in a very deliberate manner, as has been brought out by GOC and IGP Saab. Zahid Manzoor Wani, who was the commander of Jaish-e-Mohammed in the entire area, his neutralization will go a long way in bringing about a lot of relief to the population of Pulwama
in future as well. Thank you. Jai Hind. सर एक सवाल है सर, दिन ब दिन जो है मिलिटेंसी का ग्राफ जो है घटता जा रहा है, बड़ी मात्रा में मिलिटेंट मारे जाते हैं, तो ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रही, तो इतना भारी मिकदार में हथियार इनके पास कहाँ से आता है सर, कब तक इस पे? देखिए, जहाँ भी टेररिस्ट का जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार कि बिलो 200 आया है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं सिंसली कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार आने के बहुत जो आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटैम्प्ट हुआ, 35 अटैम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, बाय रोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, तो बहुत सारे तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं 2 FT मारा गया है, कहीं 1 मारा गया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में FT हाई रीचेस से नीचे आता है और गांव में आता है, फिर गांव वाले से सिविलियन से हमको खबर मिलता है, फिर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, FT मारा जाया है। ये फैक्ट है कि इस बार पहला, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस बार FT और लोकल बराबर हो गया है। नंबर FT का है, स्ट्रेंथ ठीक है, ठाक है, हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और पूरा फोकस कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी किया था, हाइब्रिड टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों चैलेंज रहे हमारे लिए, और दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग जनवरी लास्ट ईयर हाइब्रिड टेररिस्ट का टर्न पॉइंट किए थे और आप लोग शेयर किए थे, आप लोग मजाक उड़ाए थे, और ये जाहिर से खतरनाक पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ घूमता रहता था अपने, और उसके घर में मारा गया भी। इस पर हम लोग यूपी केस लगाएंगे, बाकी घर वाले को भी इसको हम लोग इस केस में बुक करेंगे। इसमें देखिए, हर एक साल जनवरी फरवरी मंथ में टेररिस्ट का ये प्रोपेगेंडा चलाता है रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए। ये ऐसे हथियार को दिखाया कि जो यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हथियार आएगा तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स इतना काबिल है कि उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। इससे कोई घबराने की बात नहीं, हथियार से कुछ नहीं होता है, मेन होता है इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप 3 और 3 से मिलिटेंट को मार सकते हैं, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस महीने में अभी तक 11 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 21 टेररिस्ट मारा गया। उस 21 से 8 टेररिस्ट पाकिस्तानी है। नहीं, हम लोग कभी नहीं बोला, हम लोग ये बोला था जाहिद वानी प्लस कुछ टेररिस्ट है। आज की डेट में उसी गांव का, करीमाबाद का एक टेररिस्ट बच गया, यहाँ की बच गया है, और उसके अलावा हो सकता है कि 2-3 और FT हो। FT कभी नॉर्थ कश्मीर से आता है, आते जाते रहता है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नंबर 1 टारगेट लेके JS को न्यूट्रलाइज करें। नहीं, आप कैसे जर्नलिस्ट है, डाटा देखिए, 2019, 20, 21, 22 लास्ट ईयर 126 रिक्रूटमेंट है। इस साल और कम लाएंगे, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं।